So here are the two questions that Ria sent me. They are very interesting. State two rational numbers and irrational numbers between root 2 and root 3. Very interesting. Two rational numbers between root 2 and root 3, as well as two irrational numbers between root 2 and root 3. Two irrational numbers you get very easily, but rational numbers के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. And the next question, state whether x plus 1 upon x is rational or irrational if x is equal to 3 plus 2 root 2. Alright. Children, हम पहले first one solve करते हैं, but for that solution, let's say this is first one and this is second one. Solution first one. Root 2 and root 3. ये दो नंबर लाइन, दो irrational number है. On the number line somewhere, कहीं पे है. On the number line, root 2 will be to the left and root 3 will be to the right. Okay? Because root 3 is larger than root 2. Now, you want rational numbers as well as irrational numbers between root 2 and root 3. Now, you need to find the value of root 2, children. You need to find the value of root 2. Now, what is value of root 2? It is approximately 4. Yeah, 1.4. If you take only one place of decimal, it is 1.4 or 1.42. Let me take that. Two places of decimal. Square root of 2 is 1.42 and square root of 3 is 1.73. At least ये दो रूट की वैल्यू आपको समझना है. आपको ये वैल्यू याद रखनी होगी. Root 2 is 1.42 approximately and root 3 is 1.73 approximately. अब स्क्वायर रूट ढूंढना है तो वो आज इस सेशन में लर्न भी करेंगे, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, उसके लिए एक पूरा सेशन चाहिए. हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. चलिए. So now you know the value of root 2 is 1.42 and the value of root 3 is 1.73 approximately. There can be more places of decimals, but I have taken only 2. All right. तो अब तो रेशनल नंबर आपको मिल गया. आपको रेशनल नंबर मिल गया. All right. रेशनल नंबर्स between root 2 and root 3 are. आप ये दोनों के बीच कोई भी नंबर ले लो. 1.45 ले लिया मैंने, जो 1.42 और 1.73 के बीच है, एंड दो ही चाहिए, सो मैं ले लेता हूं 1.50. 1.45 ये एग्जैक्ट लिया है. यहां तो आगे नंबर है, देयर आर फर्दर नंबर्स, बट आई हैव टेकन 1.45 and 1.50. नाउ दिस इज 145 upon 100 and this one is 150 upon 100. So 5 20s are 5 2s are 9s are. So this is 29 upon 20. 0 0 cancel. 5 2s are 5 3s are. So this is 3 upon 2. So these are the two rational numbers between root 2 and root 3. There are infinite rational numbers. आप जो चाहे ले सकते हैं. But here 20 upon 21 and 3 upon 2 are two rational numbers. They are improper. So you can convert into mixed numbers. But I am not doing that because I am representing them in the form A upon B या P upon Q, because we are looking for rational numbers. We are looking for rational numbers. Is that clear, children? Understood? Yes, sir. आपकी समझ में आया? Yes, sir. Alright. मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं. एक और एग्जांपल ले लेता हूं इस तरीके का. ये तो आंसर हो गया ना. Suppose you want two rational numbers between root 7 and root 10. So ये नंबर लाइन
समझ सकते हैं रूट 7 लेफ्ट में होगा, रूट 10 राइट में होगा. Right now I am using calculator to find the square root of 7. 7 and उसका square root 2.64 approximately. 2.64 approximately. Okay, and square root of 10. 10 और उसका square root, that is 3.16 approximately. Bus children, now after knowing this, you choose. Suppose के 5 numbers चाहिए, 5 rational numbers between root 3 and root 10. So rational numbers between root 7 and root 10 are. चलिए इसके आगे चलिए. 2.70 मैंने ले लिया, फिर 2.75 ले लिया, 2.80 ले लिया, 2.85 ले लिया, 2.90 ले लिया, अरे बाबा 300 ले लिया, एंड सो बस बहुत सारे मैंने ले लिए. इसके बीच और भी ले सकते हैं. These are all, make sure that these numbers lie between 2.64 and 3.16. All right, are you getting me? So this is 270 upon 100. This is 275 upon 100. 280 upon 100. This is 285 upon 100. 290 upon 100. And this is simply 3. So 3 upon 1 you can say. या 300 आप लिखते हैं 300 तो अपॉन 100, 0 कैंसिल होगा, ये 0 कैंसिल, ये 5 20s 5 5s and 5 7s 0 कैंसिल, 2 5s 2 14s 5 20s 5 5s 5 5s again 5 4s 5 11s 0 cancel. So this one is 27 upon 10, the other one is 11 upon 4. Next is 14 upon 5. Next is 57 upon 20. Next is 29 upon 10. And next is 3 upon 1. These are rational numbers lying between root 7 and root 10. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now moving back to this question. रेशनल नंबर तो मिल गए, अब इरेशनल नंबर भी चाहिए आपको. वो तो बड़ा आसान है. That is very easy to write. फिर से root 2 और root 3. Now irrational numbers between root 2 and root 3 are. Children, very easy. वो है root. चाहे उतना ले लो, यहां तो 2 ही मांगा है. अब 2 और 3 के बीच के नंबर ले लो. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 हो गए. All these are the irrational number between root 2 and root 3. Very simple. Got that? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और जो पिछला वाला, Yes, sir. suppose you want between root 7 and root 10, तो irrational number between root 7 and root 10 will be, आप root जितना चाहे ले लो, जितने भी चाहिए. I'm taking only 4. अब 7 और 10 के बीच 7.5, 8.5, 9.5, 9.6. Make sure 7.5, 8.5, 9.5 और 9.6 7 और 10 के बीच होने चाहिए. So these are irrational numbers between root 7 and root 10. ऊपर these are irrational numbers between root 2 and root 3. I hope Ria's questions are answered. Now if you all have any such, second one is still left. State whether x plus 1 upon x is rational or irrational if x is equal to 3 plus 2 root 2. This is x, 3 plus 2 root 2. अब आपको ढूंढना है x plus 1 upon x. Is that rational or irrational? Oh children,
आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ढूंढनी होगी. यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x. आप यहां x की वैल्यू डाल सकते हैं, विच इज 3 plus 2 root 2, and then put the value of 1 upon x. Okay, 1 upon x की वैल्यू, ये रिजल्ट 1 बोलो जहां x की वैल्यू है. Now let's find out 1 upon x. Therefore 1 upon x will be 1 upon, बोलिए x की वैल्यू 3 plus 2 root 2. अरे बाबा, इसको क्या कहते हैं? जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होते हैं तो क्या कहते हैं? Surds. Surds. Correct. Surds. And whenever you come across surds, yes, जब surds होता है तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा. So here you will have to rationalize the denominator. What is the rationalizing factor? 3 minus 2 root 2. Very Three good. minus two root Very good. So Three here minus 2 root you are going Three to minus two multiply root and divide by 3 minus 2 root 2. 3 minus 2 root 2. Now 1 into 3 minus 2 root 2 is 3 minus 2 root 2. Now this is first term square minus second term square. 3 or ये 2 root 2. Now this gives me 3 minus 2 root 2 upon 3 square is 9. 2 square 4 or root 2 square 2. 4 2s are 8. So that gives me 3 minus 2 root 2 upon 9 minus 8 is 1. So this is 3 minus 2 root 2. और वो वैल्यू है 1 upon x की. That is value of 1 upon x. Let me say this is result 2. So what is x? 3 plus 2 root 2. What is 1 upon x now? 3 minus 2 root 2. So let's put the value in this expression. ये जो expression है उसमें value डाल दीजिए. What is x? 3 plus 2 root 2 plus what is 1 upon x? 3 minus 2 root 2. 3 minus 2 root 2. 2 root 2 minus 2 root 2. 3 plus 3 6. बोलिए ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? What is the value of x plus 1 upon x? 6. 6. And is 6 rational or irrational? Rational. 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 So x plus 1 upon x is rational. So state whether x plus 1 upon x is rational or irrational. The answer is x plus 1 upon x is rational when x equal to 3 plus 2 root 2. Okay. Now, if you all have any questions to ask, because Ria's questions are answered. Now, if you have got to ask anything, you may. Now, the remaining part of this session is all yours. It's all yours. बोलिए, कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए. Yes, sir. Yes. I have a question. Sir, on a number line, we every time decide the scale by assuming the length of number line 12 centimeter. So after deciding the scale, can we extend the length of the number line above 12 centimeter See, if required? in your book, maximum actually 15 centimeter ले सकते हैं, but we take the length maximum as 12 centimeter. तो यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यह ओरिजिन ले सकते हैं या कोई भी नंबर पॉइंट ले सकते हैं और यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर तक हम ले सकते हैं. डू अंडरस्टैंड? अब कितने यूनिट है वो देखना पड़ेगा. हमें कहां से कहां यूनिट लेना है. लाइक से सपोज के रूट थ्री चाहिए, रूट 5 चाहिए, रूट 7 चाहिए. ये नंबर्स आपको नंबर लाइन पे देना है. तो नाउ दिस रूट 1, रूट 4, रूट 9, root 16, these are perfect squares. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Alright? अब इसको देखिए, ये रूट 3 यहां आएगा, रूट 3 रूट 1 और रूट 4 के बीच, रूट 5 यहां आएगा, रूट 5 रूट 7 वो भी उसी के बीच आएगा. करेक्ट? तो आपको क्या चाहिए? 1,
divide by 4 parts. देखो 1 2 3 लेना है तो 1 2 3 parts चाहिए. So you can divide 12 by 3. 3 4s are 12, 0. So if you want, you can take 4 centimeter. लेकिन मैंने आपको बोला है ये you can take 1 unit is equal to 4 centimeter. So आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, फिर 0 रखोगे, then you will take 4 centimeter और कट करोगे, 4 centimeter और कट करोगे, 4 centimeter और कट करोगे, ये 1 ये 2 ये 3 हो गए. नंबर लाइन पे आपके पास 1 2 और 3 मिल गया. नाउ रूट 3 1 और 2 के बीच होगा, यहां समवेयर रूट 3 आएगा आपका. रूट 5 2 और 3 के बीच आएगा, समवेयर यहां रूट 5 आएगा. रूट 7 वही 2 और 3 के बीच आएगा, समवेयर. मतलब आपको कोई गड़बड़ी नहीं रहेगी. यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. दोस रूट्स या दोस इरेशनल नंबर्स you will get on the number line. Did you get from here? Now this is a difficult concept actually. Yes, sir. And sir, can we use the technique in which you to express decimal irrational number on number line by circle, semicircle method? I just sent the video. Did you see the video? Yes, sir. Right. अभी उसके बारे में मैं बताता हूं. There is a universal method. That method can be employed for portraying any irrational number on the number line. कोई भी irrational number आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो वो वाली मेथड चलेगी. वो यूनिवर्सल मेथड है. ओके, इट्स नॉट दैट रूट 4.3 रूट 4.5 रूट 2.9. अब वही मैं दिखाता हूं. चलो, आई विल शो यू कि वो मेथड क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स. सपोज आपको रूट 7 नंबर लाइन पे दिखाना है. यू वांट टू शो रूट 7 ऑन द नंबर लाइन, ओनली वन इरेशनल नंबर. तो पहले एक काम कीजिए. ड्रॉ दैट नंबर लाइन. कहीं पे एक पॉइंट ले लीजिए और टेक लाइन सेगमेंट whose length is 7 सेंटीमीटर. यहां पॉइंट ले लिया और यहां ले लिया. इसको A कहा, इसको B कहा. Alright children, actually this point will be O, origin. ये मेथड में ये origin होगा. और ये मैंने 7 सेंटीमीटर ले लिया. यूनिट्स नहीं, मैंने 7 सेंटीमीटर. That means 1 unit is equal to 1 centimeter हुआ. 7 centimeter is 7 units. So 1 centimeter is equal to 1 unit equal to 1 centimeter. और आगे इसके बाद I am taking one more point B. O के बाद आगे one more point B such that OB is equal to 1 centimeter. 1 centimeter मतलब 1 unit हुआ. So ये AO 7 centimeter है, OB 1 centimeter है. Always take 1 centimeter, 1 unit आगे लेना है. Alright, now you got A, you got B. You have to obtain the midpoint of line segment AB. I hope you all have learnt the construction of midpoint in standard 8. Have you all learned? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now how to get midpoint? Okay, वो construction में अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं basic दिखा रहा हूं. So exactly, okay. How much is AB? AO is 7 and OB is 1. So how much is AB? 8 centimeter. Correct. 8 centimeter. Very good. 7 plus 1 8. So AB is equal to 8 centimeter. तो AB का midpoint कहाँ आना चाहिए? How far from A? 4 centimeter. Very good. At a distance of 4 centimeter. So यहाँ से मैं रूलर से यहाँ मार्क करता हूँ 4 centimeter. This is point M. So AM is 4 centimeter. MB is also 4 centimeter. अब how much will be MO? MB is 4 centimeter. उसमें से OB 1 centimeter. तो MO will be how much? 3 centimeter. Correct. 3 centimeter. MO will be 3 centimeter.
Now I'm taking M center and drawing a circle whose radius is AM. So you will get a semicircle like this. I'm not drawing the whole circle, but only a semicircle I'm drawing. And then using the set square, here I'm drawing perpendicular OC. I'm drawing perpendicular OC. Alright, which touches the circle at point C. ये right angle है. Now this is very very interesting. कुछ चमत्कार मैजिक होने वाला है यहाँ. बोलिए, how much is MO? 3 centimeter. How much is CM? Very interesting. How much is CM? अच्छा, what is CM? What is CM? What is AM? What is BM? Radii of the same circle. Very good. और ये रेडियस हमने कितना लिया था? MA. वो रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ किया ना. What is MA? How much is MA? 4 centimeter. Correct. So CM will be 4 centimeter. BM 4 centimeter. So this is 4 centimeter. This is 4 centimeter. Correct? CM. Now you have got a right angle triangle. So use Pythagoras. CM square is equal to CO square plus MO square. What is CM square? 4 square. What is CO square? Pata nahi. What is MO square? 3 square. Centimeter. 3 centimeter. Right. Sorry. So now this is 4 square. Bring this side. Minus 3 square is equal to CO square. 4 square is 16. Minus 3 square is 9. And that is CO square. So therefore, CO square is equal to 7. 16 minus 7, 9 is 7. So CO square is 7. Taking square root on both sides. So CO square root on is root 7. Hey children, ये चमत्कार, ये चमत्कार, ये चमत्कार, CO root 7 जो हमें चाहिए. So now you got that distance CO root centimeter, root 7 centimeter. Are you getting me, children? So now you can take O center, radius CO and projection. This point, let's say D. ये D is root 7 और ये origin होगा. Origin 0 and this is root 7. Alright? यहां कुछ नंबर्स, कुछ भी नंबर्स नहीं लिखना है. So automatically root 7 आया. Let's do another one. मुझे root 10 चाहिए. Sir. Yes, बेटा. Sir. Yes. Sir, have you obtained the measure of CM? CM. Yes. Yes, sir. 4 centimeter. Now look here. I've drawn this picture, बेटा. Yes, CM. M is the center of that circle and C is a point on the circle. तो ये radius हुआ ना ये circle का? Yes, sir. हाँ. Yes. MA भी radius है, MB भी radius है. Now you know M is midpoint of AB. So पूरा 8 centimeter का आधा 4 centimeter हो गया. So MA which is radius of the circle is 4 centimeter. और कोई भी circle का radius same होता है. So this is 4, this is also 4. Okay, sir. Understood. Yes. Okay, sir. We'll take another one. थोड़ा easy calculation के लिए root 11 odd number ले लेता हूं. यहां भी स्केल आएगा, लेकिन स्केल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे. स्केल निकालने में हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे. It will be a small figure sometimes, but that will do because in scale there is lot of confusion. Scale I am fixing it. 1 unit is 1 centimeter. That's it. Okay. Now you want to represent root 11. You want to represent root 11 on the number line. So first I am drawing a number line. I am choosing one point A to the extreme left. Then I get point O. I am going to get point O such that AO equal to 11 centimeter.
नहीं, this is O. AO is 11 centimeter. Right? Now from point O I'm going to get another point B which is at 1 unit distance. So 1 centimeter ही लेना है. So this is point B. So this is 1 centimeter. तो AB कितना हुआ? AO is 11. OB is 1. So how much is AB? 12 centimeter. 12 centimeter. तो अब जो लाइन सेगमेंट AB बना उसका मुझे मिड पॉइंट चाहिए. सो वो कहाँ आएगा? एग्जैक्टली बीच में यहाँ. लेट्स से M. राइट. सो हाउ मच विल बी AM? 6 centimeter. 12 का आधा 6 centimeter. And how much will be MB? 6 centimeter. 6 और 6 12 तभी तो वो मिड पॉइंट बनेगा. अभी ये जो है 1 यूनिट है. OB is 1 unit. या समझिए बराबर. So out of 6 centimeter, if I remove this 1 centimeter, this will be 5 centimeter. Correct? OM is 5 centimeter. Did you get that? Yes, sir. In this, I'm explaining. M dash Yes, O sir. dash B. M dash O dash B. So MO plus OB is equal to MB. समझिए इसको. M dash O dash B. So MO plus OB is equal to MB. समझ में आया? ये बिटवीननेस आपका ज्योमेट्री में आएगा. Yes. सुरेश सर करा रहे हैं ज्योमेट्री, राइट? नाउ दिस MO पता नहीं, सो आई एम राइटिंग MO. OB वो 1 सेंटीमीटर है और MB वो 6 सेंटीमीटर है. So MO is 6 minus 1, so that is MO is 5. So MO is 5. Alright. Now I am drawing circle with center M and radius AM. Yeah, you can say MB. So circle with center M and radius AM. वो यहाँ ही आएगा. Alright. Then at point O with set square, I am drawing perpendicular which touches the circle at point C. और C को मैं M से जोड़ दूं तो ये रेडियस हुआ. MA is radius, MB is radius, and MC is also radius. But radius is 6, so you can say MC is 6, yeah, CM is 6. ये perpendicular, and MO here it is 5. MO is 5, CM is 6, and you are supposed to find CO. So use Pythagoras. Right angle ये है, उसके सामने CM है. So CM square is equal to CO square plus OM square. Now CM is 6. 6 square. CO square we don't know. ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं. Plus OM we have calculated 5 square. चलिए. This is 36. 5 square 25 बन के ये बाजू आया minus 25. That is CO square. This gives me 11. That is CO square. Taking square root on both sides, i.e. CO is equal to root 11. So this CO, चमत्कार, जादू, वो root 11 ही आया. CO root 11 ही आया. Now ये CO का projection कर दो. Take O center and radius CO and project. This is origin. Number corresponding to that is 0, and this new point D, the number corresponding to that is root 11. So that's how you can do. ये method हर जगह पे application है. यदि आपको root 5.4 लेना है तो start AO 5.4 सेंटीमीटर, फिर OB 1 सेंटीमीटर, फिर मिड पॉइंट कंस्ट्रक्ट करो, फिर सेमी सर्कल, फिर वो पॉइंट O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और वही ये ऑटोमेटिकली रूट 5.4 हो जाएगा. ऑटोमेटिकली रूट 5.4 हो जाएगा. लेकिन आपको रूट 11 चाहिए तो AO 11 सेंटीमीटर लो. आपको रूट 7 चाहिए तो AO रूट 7 लो. आपको रूट 5 चाहिए तो AO 5 सेंटीमीटर लो. फिर OB तो 1 सेंटीमीटर फिक्स ही है.
Then you obtain the midpoint. Draw the circle. यहाँ perpendicular. This length. आपने ये AO 11 लिया तो OC root 11 ही आएगा. AO 5 लिया तो OC root 5 ही आएगा. AO 5.4 लिया तो CO root 5.4 ही आएगा. तो उसका प्रोजेक्शन हमें दे देता है. यहाँ फर्क इतना है कि आपको ओरिजिन यहां लिखना है, यहां से नहीं, not from the extreme left. Your origin starts from here. O. That's why I'm taking that point AO. Point O ले रहा हूं और distance AO equal to 11 units या 5.4 units या root 4.3 चाहिए. तो first I'll take AO equal to 4.3 centimeter. Then OB equal to 1 centimeter. Then I'll obtain midpoint of AB. Then I'll draw the circle. Then with the help of set square I'll draw perpendicular at point O which touches the circle. At point C ये OC automatically root 4.3 आएगा. मैंने कैलकुलेशन दिखाया. Okay. Yes. Sir, Yes. बोलिए सौम्या. sir, every time do we have to see this? Do we have to put this calculation? આપણે સર બતાવવું પડે આ Yes. triangle વાળું, No, hypotenuse no. વાળું? In this case, especially in this case, ये केस रूट 11 रूट 7 होगा तो हम दूसरी मेथड करेंगे. आपको ये मेथड करना हो तो बताना पड़ेगा. ऑलराइट. लेकिन ये जो है रूट 5.4 रूट 4.3 उसके लिए आप जो पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं वो बताने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू शो दैट कैलकुलेशन. ऑलराइट. Okay, sir. Yes. Any more questions? So, yeah, ये difficult है understand करने के लिए. It's difficult to understand, but hope you have understood. Yes, sir. Good. Yes, sir. Good. Good. That's true. Yes, sir. All right. Fine. So that's all for today. You can send me your more difficulties. If I find those questions really interesting, then we can share the solution of those questions with everyone. All right. So see you then. Bye bye. Bye, Stay sir. safe. Take care Bye, of sir. yourselves. Right, sir. Hi, Yes. sir. Follow the COVID guidelines. The third Right, sir. wave has already commenced. Be careful. Take care. Bye bye. Bye, sir.